child without a direction and a childhood miles away from literacy. Is this what our nation meant by the dream of an independent India? Life that remains endlessly busy in confronting poverty and disease without access to the very basics of livelihood. Life spent in a struggle for existence. But now, all that is changing. The sheen on these proud faces narrates the saga of a turnaround. Sparkle in these eyes sings the song of an emerging India, reflecting the dreams of a glorious and self-reliant nation. An India that is steadily moving away from the evil darkness of illiteracy and casteism. A nation turning bright and resplendent with the rise of Ekal Vidyalaya on its horizon. A movement that spreads sunshine and emits rays of knowledge across India. The Ekal movement is firmly committed towards ameliorating lives distressed by poverty. Today, the knowledge revolution inspired by Ekal Vidyalayas has become a key factor in India's integrity and empowerment. Here is a movement that carries forward the dream of a prosperous and confident India, drawing strength from the visions of Mahatma Gandhi, a mission that envisages a bright future for the remotest villages of Bharatvarsha. But that is possible only when these villages have access to basic education. India's villages will be self-reliant only when each little girl in each remote village becomes well educated. The Ekal movement, inspired by the teachings of Mahatma Gandhi, has disseminated a value-based basic education through Ekal Vidyalayas to the children, besides showing a new way of health care and self-reliance to India's countryside. By lighting the lamp of education in far-flung villages, the vision of Swami Vivekananda is also being realized through the efforts of the Ekal Vidyalaya movement. The Ekal Vidyalaya has come a long way, reaching the doorsteps of children living in deep, distant villages. Ekal movement, carrying the mission of setting up Ekal Vidyalayas or single teacher schools in 1 lakh villages, is all set to ignite the spirit of national integrity and national reconstruction. A target being achieved through basic education, health education, development education, empowerment education, cultural traditions, self-reliance and mass awakening. A journey that began from only 60 villages in 1988 has become a mass movement, expanding today to the heights of Himalayas. Overlooking the snow-clad mountains and tranquil Dal Lake, the Ekal Vidyalaya movement has now reached the children of Jammu and Kashmir, the paradise on earth. These children are keen to know, understand and emulate their glorious culture. Breaking the constrictions of caste and religion, Ekal Vidyalaya has emerged as a beacon of education for Jammu and Kashmir. ये जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसमें हम हर रिलीजन का ये सिखाते हैं कि हर रिलीजन का रेस्पेक्ट करना चाहिए. Spreading its radiance throughout. With the Ekal Vidyalaya, the echo of unity in diversity has begun resounding across this breathtakingly beautiful valley. Establishing the Ekal Vidyalaya in Jammu Kashmir was a difficult task. Coming face to face with tough circumstances, convincing villagers here was like walking on a naked sword. But now, the villagers are accepting the Ekal Vidyalayas with a sense of affinity. In their Vidyalayas, they have now started according traditional welcome to their guests. जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई उनकी होती है, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तभी का एक अच्छा समाज मिलेगा हमें,
और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें नहीं कि उनको फीस इसलिए भरनी पड़ती है, बिल्कुल फ्री। जो भी आएगा यहाँ पे वो अच्छी तरह पढ़ लेगा। बच्चों में सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है ना बच्चों में। आप इनको देख लो, काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है इनके, इनने क्लास में अब इम्प्रूव किया अच्छी तरह सभी बच्चों ने। गाँव वालों को इस पे फ़ख्र है, एनजीओ पे, जो एनजीओ यहाँ पे काम कर रहा है उस पर फ़ख्र है गाँव वालों को। Located in Jammu in a small village close to the country's border, the educated voices and the valued traditions of the children of Ekal Vidyalaya have left an indelible impact on the villagers. ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗੀ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਣ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੀ, ਇੰਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਅਸ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। Replete with the spirit of equality and love for all, Ekal Vidyalaya is striking a new chord in newer regions each day. Times are changing. The ambience is changing, ushering in a revolution of thoughts and ideas. मुझे लगता है आने वाले समय में इसका बहुत असर पड़ेगा, लोग इसको मतलब ज़्यादा वेलकम करेंगे। तो जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे एरिया में भी ऐसे एकल विद्यालय होनी चाहिए। The little flowers of the Ekal family are infused with the Himalaya-like flight of patriotism. Thousands of volunteers are today committed towards nurturing feelings of love, sympathy and leadership. They aim to create a sense of Vasudhaiv Kutumbakam by doing away with the social disparity. Reach and scope of the Ekal movement is expanding with every passing day. Today, through the medium of the Ekal Vidyalaya, a large number of young people in Jammu and Kashmir are volunteering their selfless services. The Ekal heritage has opened up the portals of social amity, reviving Jammu and Kashmir's faith in education. The Ekal Vidyalayas are slowly but surely transforming the lifestyle. शिक्षा के विस्तार के साथ साथ हमने जो संस्कार आज दिया है, आज बच्चे अपना अतीत को, अपना कश्मीरियत को वो याद करना शुरू किया। ये कश्मीरियत जो है वो अपना ज़िंदगी में झलक रहा है। ये परिवर्तन हमने एकल विद्यालय के माध्यम से गांव-गांव में कर पाया। जब से यहाँ हमने स्टार्ट किया तो मुझे कश्मीरी में जो महीनों के नाम थे वो मुझे पता नहीं थे, वो मैंने मतलब सीखे। मैं बड़ों को सलाम ना करता था, अपने जो रिश्तेदार थे उनको भी सलाम नहीं करता था। और जब मैं यहाँ आया मुझे सब चेंजेस यहाँ ही आए। इनके माँ बाप यहाँ आते हैं, कहते हैं जब से ये स्कूल खुला है तब से इन बच्चों में बहुत सी चेंज आई हैं। इन्होंने डिसिप्लिन सीखा, इन्होंने तहजीब सीखा, इन्होंने कहा माँ बाप के साथ कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, उस्ताद के सामने किस सलूक से पेश आना चाहिए, ये सब कुछ सीखा उन्होंने। और इनके माँ बाप बहुत खुश हुए हैं जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ है। अपने घरों को सफाई रखना चाहिए और अपने आप को सफाई रखना चाहिए और माहौल को भी साफ रखना चाहिए। इस स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए और अपना देश भी रोशन करना चाहिए। The spring of Ekal has just set in among the dales of Jammu Kashmir. This is the beginning of a new tomorrow. Mark and listen to the voice of these innocent toddlers striding towards a bright future. Fearless, sincere and committed as they are, their single-minded goal is to build an educated India, a healthy India and an empowered India. Come and join us. This paradise on earth is inviting you. Lend your support to these lovely flowers. Share and own the dreams of this heaven on earth. Be a corporate partner, co-scripting this splendid saga of the Ekal movement, ornating India's crown, Jammu and Kashmir. That will be rendering a real true service to Mother India. That will mean reliving the dreams of our nation's founding fathers of a glorious and self-reliant nation.
है।